Ji. Basically, when you are going to start your online business, and you want to set up your own store, तो उसके अंदर जो सबसे मेजर डिसीजन होता है वो ये होता है कि यार जो वेबसाइट बिल्ड की जाए वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड की जाए या कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चीज़ कंसिडर करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, आपका रोड मैप क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपके गोल्स के साथ ये सारी टेक्नोलॉजी दैट शुड बी अलाइन विद. ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग फॉर समथिंग बिगर तो ऑब्वियसली आपने उसके लिए कस्टमाइज बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, तो देन यू गो फॉर समथिंग दैट इज़ कस्टमाइजेबल इन द फ्यूचर एज वेल, जिसके अंदर इतना स्कोप हो या जिसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि कल फ्यूचर की जो नीड्स हैं वो अकोमोडेट कर सके. However, if you are just at the initial stage or you just want to experiment with the things, so sorry, so I would suggest you to either pick up something from WordPress or Shopify. अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन दूंगा जो कि बहुत बेसिक लेवल के ऊपर होगा, विच माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और विच कैन हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन ऑन इट कि मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस के लिए पिकअप करना है. So सबसे पहले अगर आप इफ़ यू आर गोइंग इनटू द इन दिस बिजनेस, सो थोड़े से मैं आपको कंपैरिजन दूंगा. वर्डप्रेस इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आप अपना स्टोर या वेबसाइट को बिल्ड करके यू कैन स्टार्ट सेलिंग दैट प्रोडक्ट्स. And obviously there are no monthly fees. It's easy actually to because however you need a certain skill set to build or to customize some themes on that. Obviously you need to go for something who's professional in that जो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंगली इसको कर सके. एंड सबसे बड़ा एडवांटेज उसके अंदर ये है कि इट्स अ फ्री, सो आपको इनिशियली कोई इसके अंदर कोई खास कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी एंड यू कैन टेस्ट दैट. However, on the other side, if we go for the Shopify, तो उसके अंदर obviously we need to pay $29 per month to the platform, जिसके अंदर hosting भी होती है. And by the way, अगर if you're going for WordPress, you need to have separate hosting for that. However, if you're going for Shopify, then you don't need to do that. $29 is covered by both hosting and obviously the technology as well, जो कि आपको platform देती है अपना store build करने के लिए. So उसके ऊपर आप जा सकते हैं. आई हैव एक्सपीरियंस बोथ प्लेटफॉर्म्स पर्सनली. वर्डप्रेस के ऊपर भी मैंने अपने स्टोर को चलाया हुआ है और शॉपिफाई के ऊपर भी मैं अब करंटली अपने स्टोर को चला रहा हूँ. उसके अंदर बिल्कुल देखें, शॉपिफाई इज़ द प्लेटफॉर्म विच इज़ बिल्ट फॉर ई कॉमर्स पर्पस, ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा. वर्डप्रेस के ऊपर आप अदर साइट्स और अदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. आई सजेस्ट कि अगर आपने कोई भी अगर आपने अपने स्टोर के लिए एक टेक्नोलॉजी या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक तो उसके एनालिटिक्स बड़े अच्छे हैं एंड देन इट इज़ पर्पसली बिल्ट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस. इट्स नॉट समथिंग जो कि आप इट इज समथिंग दैट यू कैन से दैट कि अगर जी मैं कुछ भी इसके अंदर करना चाहूँगा या वो करना चाहूँगा, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर ऑब्वियसली. हाउएवर जो कि वर्डप्रेस के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है, यू नीड अ सर्टन एक्सपर्टीज़ फॉर दैट. वर्डप्रेस के अंदर ऑब्वियसली आपको क्योंकि आपको एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट चाहिए होती है एंड यू ऑब्वियसली यू नीड टू टेक समवन ऑन बोर्ड एज वेल कि जो आपको सपोर्ट देता रहे. शॉपिफाई के अंदर ट्विकिंग्स आप फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू इजीली कर सकते हैं. बहुत सी ऑप्शंस ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप हैं, आप यू कैन लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब एज वेल. एंड देन एज आई से के एनालिटिक्स बड़े अच्छे हैं उसके, थोड़ा सा आपका अच्छा स्टोर हो तो उसके बड़े सीमलेसली वो चेकआउट हो जाता है और बड़े अच्छे उसके अंदर फीचर्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो एंड इट्स वर्थ टू हैव शॉपिफाई. वो आप अगर प्रॉपर्ली उसको एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो एक अच्छे स्टोर एक अच्छा थीम बना लेते हैं, देन दिस कॉस्ट कवर्स अप. तकरीबन 8-9 हज़ार पर मंथ बनती है. अब क्योंकि डॉलर का रेट है, इट्स अराउंड $29 पर मंथ. वो जितनी भी कॉस्ट 8-10 हज़ार बनती है, सो वो यू कैन ईजीली कवर फ्रॉम दिस अगर आप प्रॉपर्ली उसको लेकर चल रहे हैं एंड यू स्टोर सकते हैं. हाउएवर अगर आपने एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर जाना है, कुछ ब्लॉग टाइप या कुछ आर्टिकल आपने उसके ऊपर डालने हैं, देन आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर समथिंग वर्डप्रेस, क्योंकि वो एक दैट इज़ मोर क्लोजर टू दैट काइंड ऑफ थिंग्स रादर दैन के स्टोर आप क्रिएट करें. दो लोग करते हैं बट दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको बताया.
एंड ऑब्वियसली शॉपिफाई के ऊपर एक आपको अच्छी स्पीड भी मिल जाती है, क्योंकि होस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ कस्टमाइज्ड ऑप्शंस और थीम्स की बड़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सी फ्री थिंग्स अवेलेबल है, तो वर्डप्रेस के ऊपर भी अवेलेबल है, बट यू नीड टू हैव अ सर्टेन एक्सपर्टीज फॉर दैट। So yeah, so basically if you are going into the business and if you have a certain budget for that, और आप चाहते हैं कि आप डिसअपॉइंट ना हो विद दिस, तो आई वुड सजेस्ट यू टू, आई वुड वोट फॉर शॉपिफाई। एंड अगर आपको वर्डप्रेस जाना है तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस्म की वेबसाइट अगर आपकी है, तो आप वर्डप्रेस को चूज़ कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, या आपने कीबोर्ड आपने आपने फ्यूचर फोरकास्टिंग आपकी क्या है, उसके साथ वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली अलाइन होनी चाहिए। अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मार्केट प्लेस, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको यू नीड अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन। मेरा ख्याल है कि उसके लिए probably you would not go for either Shopify or WordPress, शायद you will be going for Magento या कोई और भी टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त जो आपकी नीड को फुलफिल कर रही होती है। So yeah, that's it. Meanwhile, if you have any question, you can reach out to me, you can comment, you can email me as well. All right, thank you.